It's out of my hand, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my soul. It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my soul. लाइट ऑन करनी भूल गया था। एनीवेज, लाइट लाइट लाइट, यस आई एम लेट। मुझे यार कहीं जाना पड़ा था, सुबह सुबह कहीं जाना पड़ा, अभी वापस आए। अब स्टार्ट करेंगे हम गेंशिन इम्पैक्ट। होपफुली कल की तरह इंटरनेट मेरा हगेगा नहीं और हम आर्कन क्वेस्ट को आज अच्छे से कर पाएंगे। लवनीत भाई वेलकम। पैरालैक्स, यमुना नदी के किनारों में उगा साइमन गांजा। ए भाई बस करो, गांजा गांजा कर रहे हो, खुद तो पीते नहीं हो हैं, बस शौक है, बोलने का शौक है, ये है क्या? आर्खूनी भाई डूइंग आर्खून क्वेस्ट, बस क्या करें, रोजी रोटी है हमारी, कमाना पड़ता है। और बताओ मित्रों, साथियों, क्या चल रहा? सुजीन वेलकम वेलकम, हेलो व्हाट्सअप। स्टार्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कल मेरा इंटरनेट बीच में बंद हो गया था ना, मुझे पूरी आर्कॉन क्वेस्ट स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। होपफुली ऐसा ना हो, बट लेट्स सी कहाँ से स्टार्ट होती है। गर्लफ्रेंड का बुलावा सुबह सुबह, अरे नहीं भाई। डैम नाइस वॉलपेपर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैंने वो बनाया हुआ है, हिलने वाला वॉलपेपर है, हिलने वाला। यहाँ पे मेरा ये फ्राइडे, पीछे इनाजुमा की फोटो लगाई हुई है। किसी ने तो नोटिस किया मेरी मेहनत वॉलपेपर के पीछे। अल्ट्रा का लक चूस के खत्म हुआ भाई। क्या कह सकता हूँ भाई। डैम आर्कन भाई, मैं क्या क्या सुन रहा हूँ लवनीत भाई से। भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आई एम अ सिंगल पर्सन, ना कभी थी। आई हैव बीन इटर्नली सिंगल। सोचो, मेरी 34 साल की जिंदगी के अंदर आई हैव नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड इन माई लाइफ। विंग्स वेलकम, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून ही हो गया यार, अब 12 बजने वाले हैं। अब ये क्या डेली अपडेट होगा? वेलकम टू सिंगल कम्युनिटी। अरे मुझे तुम्हें वेलकम करना चाहिए, मैं तो बहुत ही पुराना मेंबर हूँ सिंगल कम्युनिटी का। सिंगल कम्युनिटी का पुराना मेंबर हूँ, तुम लोग नए नए हो। तो मुझे तुम्हें वेलकम करना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बाल ब्रह्मचारी, बट आई हैव बीन सिंगल।
नून भी नहीं हुआ अभी तक। अरे मतलब 6 मिनट रह गए यार नून होने में, और कितनी देर होगा नून? 6 मिनट्स टू गो। यार ये काम पहले कर लेना चाहिए, फाइल इंटेग्रिटी बहुत टाइम लगाती है। वो नहीं, बस अब स्टार्ट हो जाएगा। ब्रो आई होप जहां पे छोड़ा था लास्ट टाइम, जहाँ इंटरनेट बंद हुआ था वहीं से दोबारा स्टार्ट हो। कैंडल लाइटिंग सिमुलेटर खेल के खत्म हुआ? अरे वो तो बस उस दिन खेला था, उसके बाद मैंने दोबारा खेला नहीं। एसएसडी में तो डाल दो गेंशिन इंपैक्ट, एसएसडी में ही है। आप तो कुल पुल करने वाले थे ना, येलान कैसे कर लिया? येलान पुल हो गई, येलान पुल हो गई, कैसे क्या कर लिया? 30 पुल्स के अंदर निकल गई। गाइज लाइक दबा दो जल्दी से अगर भूल गए हो तो, और आई होप ये गेम स्टार्ट होने के बाद वहीं से स्टार्ट हो जहाँ से हमारी बंद हुई थी, नहीं तो मुझे पूरी आर्कन क्वेस्ट दोबारा से करनी पड़ेगी। फॉन्टेन कैसा लगा? अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, अभी मैं आर्कन क्वेस्ट कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग वाले एरियाज़ में ही हूँ अभी। मतलब मैंने अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन भी नहीं किया। वाह आर्कन भाई का मूविंग बैकग्राउंड। मतलब नहीं करने नहीं वाले थे, करने वाला था, किया मैंने। अरे दोबारा स्टार्ट हो गया, सब दोबारा से करना पड़ेगा। लो जी। You said you were going to see Lady Farina? मैं ये सब स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये सारा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो जिस पॉइंट तक मैं कर चुका हूँ उस पॉइंट तक मैं सारे डायलॉग स्किप करने वाला हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि मैं डायलॉग स्किप करने वाला बंदा हूँ, बिकॉज आई डोंट। अगन भाई पार्टी देने भूल गए? अरे यार देंगे देंगे। 57 पिटी है अकाउंट में, डीपीएस भी नहीं है, सो आई एम गोइंग फॉर हुताओ। गुड चॉइस। My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. कॉलेज से आते ही आपकी स्ट्रीम मजा आ जाता है। अच्छा तुम अभी कॉलेज से आ गए? 12 बजे कॉलेज से वापस? क्या बात है। आगन भाई को अरखोनी भाई करके ही दाम लूंगा। हुताओ बैड चॉइस, राइडर निकालो। Let us make a toast in honor of this traveler and his companion. हाँ ये बात भी सही है। who have journeyed here from distant lands. यार ये फुरीना के डायलॉग जो हैं फोसल और के स्किप क्यों नहीं हो रहे? Is she talking about it? I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other. Fear is for insignificant cowards. Of course, seeking an eye. नेवो का स्किलिंग काफी ज्यादा है बोल रहे हैं, देखते हैं। मैं तो कंफ्यूज हूँ। न्यू या वर्थ है इसलिए आया तो मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं पुल ही नहीं कर रहा। इतना टाइम नहीं है भाई, इतने रिसोर्सेज नहीं है नए कैरेक्टर को पुल करने के लिए। पुराने वाले बिल्ड करूंगा पहले। What's with these Wow, I didn't expect to see. Wait, does Hey, what's all the commotion? Of course. लिनी ले लो। हुताओ मेरी That's the आईडी पे one 2 साल से है, traveler. बस बिल्ड करके छोड़ The दी। one all C1 those के बिना stories बहुत are दिमाग about. खराब कैरेक्टर है। Lady Farina आई एम पुलिंग came हुताओ here to फॉर हर न्यू personally डैमेज। see टीपीएस you. राइडन के लिए C2 Oh, चाहिए, I ये तो bet है। this is going to be the duel of the century. ऑटो कर लो, स्किप जल्दी होता है। Oh, I've got to see this. नहीं होता, I knew Lady Farina. नहीं होता। ऑटो तब करेगा स्किप जल्दी जब डायलॉग पूरा हो जाता है। मैं देखो पहले कर सकता हूँ। Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? वेलकम जी नेक्स्ट, वेलकम वेलकम। न्यूलेट विदाउट वेपराइज टीम कॉम्प इज इक्वल टू ग्रेटर देन हुताओ वेप। इतना मैं सोचता नहीं, मैंने निकालना ही नहीं है, बात खत्म। मेरी हुताओ C1 R1 है, फिर भी बेंच्ड है, कोई काम की नहीं। राइडर निकाल लो। अरे चलो यार स्किप करो। what are you trying to do, traveler? Provoking a god in. Stand down. When Irenaeus? You see. Right. What do you care? Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक मेरे एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स अपने अपने मैक्स पोटेंशियल पे ना पहुंच जाएं, मेरा आयातो, और जब तक मेरे
जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है जब तक वो अच्छे से बिल्ड नहीं हो जाएंगे मैं नया कैरेक्टर पुल नहीं करूँगा। कल लाइट चली गई थी, नहीं भाई लाइट नहीं चली गई थी, कल इंटरनेट मेरा हक दिया था बीच में। आज के डेट में हूताओ मत ही लो भाई, पछताओगे। हूताओ के जैसे न्यूलियत को भी जोंगली लगेगा, बेनेट यूजलेस स्केलिंग एचपी से है। करो करो डिस्कस करो। According to You call that odd? precise. My apologies, Lady Farina. I don't think that Paimon here. You tell her, Winnie. So, with such an audience. Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? There. डिसलाइक As मार दो you can सब। all clearly हाँ see, क्यों नहीं क्यों नहीं। Paimon should be classified as, well, something लाइक like a मारो balloon. लाइक। इखलीचल This का rope has बजा been in the सी उड़ traveler's जाता है, hand न्यू all बिना along. जोंगली का क्या होगा It was पता just नहीं। that no one could see it before. स्केलिंग एचपी से है तो 2 हाइड्रो कैरेक्टर लगेंगे, तो क्या दिक्कत है? हाइड्रो आर्कॉन निकालो भाई लोग। भाई अभी तो पता ही नहीं हाइड्रो आर्कॉन करती क्या है। आई नीड फुरीना, अब जैसे भी हो फुल सेविंग फॉर हर। करो करो करो। Amusing. In which case, consider the यहाँ तक matter मैंने कर of ली your थी। trial resolved. यहाँ तक मैंने The क्वेस्ट लास्ट god टाइम of कर ली थी, justice will not bring charges against an innocent person. अब यहाँ से आगे करनी है। But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. Who the hell do you think you are? I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linney and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! राइडन गुड एट C0, हाँ शी इज गुड एट C0, शी इज OP एट C2। और फिर अपने वेपन के साथ तो पूछो ही मत। वैसे पहली आर्कॉन मुझे ऐसी लग रही है जिसके अंदर से ना डिवाइन वाली फीलिंग नहीं आ रही है, होता है ना डिविनिटी वाली फीलिंग आती है। जोंगली में से आती है ग्रेस, राइडन शोगन में से तो भर भर के आती है, नाहिदा में से आती है, वेंटी से भी आती है, इसमें से नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इसके अराउंड ना कोई भी मिस्ट्री नहीं रखी, 1% मिस्ट्री नहीं है फुरीना के अराउंड, तो कहाँ से आएगी फीलिंग? दौड़ गए। Just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. You never even had a chance to ask her anything. बस आर्कॉन भाई That's यस a हाँ। problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. सिस्टर नहीं है? It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. ओह पहली बार है इसका ये। वैसे न्यूलियट पे हार्ट ऑफ डेप्थ बेस्ट होगा, बस वो नया क्रिट रेट वाला सेट है। आई डोंट नो। पायरो DPS चाहिए तो लिनी ले लो ना, डैमेज आउटपुट बहुत हाई है, इवेंट विद 4 स्टार F2P बो। न्यू का चार्ज अटैक कामेहामेहा है, हाँ देखा मैंने। When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? My brother's always excited to make new friends. वैसे राइडॉसली तो पोलाम होने वाला है, कैटलिस्ट कैसे बन गया?
जब तक कैरेक्टर लॉन्च नहीं होता ना तब तक कुछ कंफर्म नहीं होता. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the opera house anyway. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Oh, you really mean it? Then I'll take you up on your offer. क्रायो कैटलिस्ट फर्स्ट है. हाँ, अब तक गेम में एक भी क्रायो कैटलिस्ट नहीं है. क्रायो पोल आर्म है, क्रायो बो यूज़र है गान्यू, ठीक है, क्रायो सोर्ड भी है, क्रायो क्लेमोर भी है. क्रायो कैटलिस्ट अब तक एक भी नहीं है गेम के अंदर. ये पहला होगा. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. ये तो नॉर्मल बैग लग रहा है. Huh? What are they going to use it for? About that. You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. This thing sounds awfully like Christian philosophy, that every person who is born with sin. Christianity के अंदर है ऐसा. हाइड्रो क्लेमोर हो गई फरीना. अगर स्टैचू ऑफ 7 को देखूं तो वो क्लेमोर पकड़ी हुई है उसने. मुझे लगा कोई डंडा सा पकड़ा हुआ है. नई सोर्ड यूजर है, उसका फिशिंग वाला वेपन उसी के लिए. हाँ, सोर्ड यूजर है. यस यस यस. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये न्यूविलेट सीक्रेट हाइड्रो आर्कॉन है और फोसलोर बस नाम की है, क्योंकि हाइड्रो ट्रैवलर का किट न्यूविलेट से मैच कर रहा है. दैट्स अ गुड थ्योरी. दैट्स अ गुड थ्योरी. यूजुअली ट्रैवलर की जो किट होती है वो आर्कॉन से मैच करती है, लेकिन हमें अभी फुरीना की या फोसलोर की किट नहीं पता ना क्या है. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? वैसे ब्लू कलर अच्छा लग रहा है. इसके साथ बढ़िया जा रहा है. There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. ओह, सेलेस्टिया तो फॉन्टेन के बिल्कुल ऊपर है ना. अभी ये वाला सीन खत्म होते मैं जरा सेलेस्टिया ढूंढूंगा. सेलेस्टिया कहाँ पर है? इट शुड बी राइट अबव वेयर वी आर. अगर आप स्टोरी खत्म कर लोगे तो एक थ्योरी बताता हूँ. खत्म करने के बाद. खत्म करने के बाद. That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. इस बार मैं बिल्कुल ध्यान से सारी स्टोरी सुनूंगा ताकि मैं अपनी खुद की भी कुछ थ्योरीज निकाल सकूं. मैंने विकिपीडिया में देखा था मेन सेलेस्टिया मिनलैंड से ज़्यादा क्लोज है. हाँ, तो बॉर्डर है ना वहाँ पर भी, वहीं पे फॉन्टेन है. वैसे आर्कॉन भाई, अबिस ऑर्डर का मोटिव क्या है, वो क्या चाहता है? अबिस ऑर्डर का मोटिव क्या है, वो क्या चाहता है? जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि अबिस ऑर्डर का मोटिव है सेलेस्टिया से बदला लेना. अबिस ऑर्डर का देखो, अबिस ऑर्डर जो था एक टाइम पे ये माना जाता था कि कानरी और अबिस ऑर्डर दे आर द सेम.
फिर बाद में पता चला कि अबिस ऑर्डर जो था उसने पहला अटैक खानरिया पे किया था और खानरिया उससे लड़ रहा था, अबिस ऑर्डर से नहीं। तो बेसिकली अबिस ऑर्डर जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल अबिस। अबिस के जो क्रिएचर्स है ना दे आर डिफरेंट एंड अबिस ऑर्डर इज पीपल ऑफ खानरिया जिन्होंने क्या कहते हैं जो अबिस को अडेप्ट करके अबिसल पावर को अडेप्ट करके सेलेस्टिया से फाइट करना चाहते हैं। तो उनका मोटिव वही बड़ा ही क्या कहते हैं, अभी किसी का मोटिव क्लियर नहीं है। जो तो फटुई है, फटुई का मोटिव क्लियर नहीं है, सेलेस्टिया का तो पता ही नहीं है, अबिस ऑर्डर का कुछ नहीं पता। धीरे धीरे स्टोरी क्लियर होगी तो पता चलेगा। We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. Ooh. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. जैसे कि हैरी पॉटर में बैग्स हैं। Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! But this is more than a bit of rain. Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. ओके, तो हमारा पहला काम है वो लोगों को बैग बांटना। बैग ले लो, बैग। गुची अरमानी। So you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, Okay. if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. वाह, that's a very different perspective. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. पर्सपेक्टिव अच्छा है भाई का। ले भाई बैग ले ले, बैग। So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Thanks. बिल्कुल। Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. Will do. The wind rises. अरे हाँ जी कप्तान साहिबा, पकड़ो। Huh? I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water Galaxy. can cover everything. आर्कन भाई एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछो भाई। Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. ये बड़ा ही बेकार पर्सपेक्टिव है। You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Done. Squall Fury. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some interesting opinions. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do before we leave?
Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. कमीशन कर लेना याद से. हाँ हाँ कर लूँगा. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. क्या सभी आर्कॉन सीक्रेटली क्राई आर्कॉन की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि किसी भी आर्कॉन ने अपने ग्नोसिस के लिए फाइट बैक नहीं की, सभी ने अपना ग्नोसिस पीसफुली दे दिया. सो फार ऐसा ही लग रहा है. यस. Oh, that would be much appreciated. We'll need some romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Waterfront on the east side of the harbor. उधर. Too slow. The wind rises. Quick, follow me. It seems we have to use Hydro to collect romaritime flowers. अच्छा ऐसा क्या? चलो ज़रा टीम चेंज कर लेते हैं. अभी तो अपनी टीम में कोई भी हाइड्रो वाला नहीं है. ये ले लेते हैं. जब तक फाइट नहीं करना तब तक तो ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. Go! बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा ये. Who is the strongest character in Genshin Impact? यार ये तो डिबेट का क्या कहते हैं, इसमें तो डिबेट की जा सकती है. मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं. Who is the strongest? लोर वाइज या गेम वाइज? Water jet! वाटर चेक. क्योंकि मैंने कल आपका अकाउंट लॉगिन किया था चेक करने के लिए, तो डायरेक्ट कट सीन स्टार्ट हो गया, तो हैंड रिस्टार्ट करके लॉग आउट कर दिया. हाँ चलो ठीक है, सही किया. हाइड्रो एमसी स्किल भी लाइक पिकाचू में तुमने चुनता हूँ. क्रेजी रॉम्स हेलो हेलो, वेलकम वेलकम. न्यू मिनट के पास रेंज काफ़ी ज़्यादा है. हाँ गाइज लाइक दबा देना किसी ने नहीं किया हो तो. You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the court of Fontaine. So, we're going to the court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... ये क्या डायलॉग बीच में काट दिया? Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. अभी देखा. What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. एज अ लोर वाइज मैं राइडन को अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मानता हूँ जो अभी तक शो हुए हैं. आपका क्या मानना है? हाँ कह सकते हो. राइडन भी कह सकते हो, दतोरे भी कह सकते हो. जो अब तक शो हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ. दतोरे भी इज अप देयर विद आर्कॉन्स. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. चोर 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 पकड़ो. सुंदर चोर. Oh, he's right. चाइल्ड की एंट्री हुई क्या? अभी नहीं हुई भाई. Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we प्लीज should नो split up. स्पॉयलर्स. प्लीज प्लीज प्लीज. You two can ride the lift over दूर there दूर and तक wait बात up मत करना top. स्पॉयलर्स की I देखने bet से. that'll be her escape route if she tries to run. All right, let's go. ऊपर जाना है.
Lenny wanted us to wait. Oh, look! Isn't that her? हाँ बिल्कुल, उसकी तरफ पॉइंट करो सीधा सीधा. Oh no! Did she notice us? She started running the other direction. अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, आपका स्ट्रीम देखकर मुझे स्पॉइलर मिल रहा है. अच्छा, तभी तो मैं रुका हुआ था कि लोग कर लेते थे, बाकी मैं तब मैं करता. भाई शाओ किस लेवल का है? एक लो लेवल गॉड तक का ही होगा. हाँ शाओ भी काफी पावरफुल है. इज अ याक्षा. What should we do? Should we chase इज her? अडेप्टस. You're right. She might also be trying to lure us away. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Lenny caught the thief. Yeah, let's go. Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going now. Thanks again. Oh, were you returning what the thief had stolen? As per lore, playable character Raiden is most. Raiden is obviously more powerful than Shao. Obviously. Welcome Ajinkya, welcome. That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Arkhon bhai, how powerful is Nahida? Nahida is powerful in a very different way. She can manipulate basically reality. So obviously she's very powerful, but she's not powerful in a one-to-one combat. लड़ाई में वो पावरफुल नहीं है. ऐश्वरी, हेलो, वेलकम. आरएनआर जैसा कुछ तो नहीं ना फॉन्टेन में है. मेलुजीन्स. राइडन गॉड है तो पावरफुल रहेगी, ये तो है. Oh, did you get hurt, Lenny? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. If you want to play at being a hero, at least try और not बताओ to मिस get hurt ऐश्वरी, doing it. how's everything? Imagine what would happen if you managed to derail our performance as a result. You're right, you're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Lenny's initiative paid off. Well, pulls मारे got Yelan, Linny and Chichi. कितने pull save किए हुए थे? All right, let's put this little detour behind us. We should go to the court of Fontaine now. Okay. Time to board the train. ट्रेन पकड़ने का टाइम आ गया है. Who is the weakest character in Genshin as a lore? ये भी debatable है. So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious way to get around. People in Fontaine really know how to use water. 50 pulls के अंदर you got Yelan and Linny. क्या बात है. C3 Lynette, C3 Goro, C3 Barbara. वाह. This is an aqua bus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. Overall, यार ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने कि लोर वाइज कौन सबसे वीक है. कुछ भी कहते कॉले कह लो, कॉले बहुत वीक है. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. ब्रो फॉन्टेन में फिशरमैन एजेंसी के पास एक क्रैक डीआर सोर्ड है, देख लो. अभी तो भाई फॉन्टेन मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया. अभी आर्कॉन क्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद करूँगा. कल लक बहुत अच्छा गया मेरा. दिख रहा है सब कुछ मिल गया 50 You के mean अंदर. it's still boring even when I'm riding with you? और डॉगी कितना अच्छा है पीछे. No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. True. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever.
to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. ब्रो येलान के साथ वेपन भी मिल गया, क्या बात है, क्या बात है भाई। मेक श्योर तुम्हारे पास ईआर की कमी ना हो। ये कौन आया? ओह शार्लोट। अरे शार्लोट पीछे रह गई। नहीं भाई, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। Huh? What? Traveler! Paimon! Charlotte! Oh, I never guessed I'd bump into you while riding the Aquabus. In the story of my life, this is big news. What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. Yeah, it's quite the coincidence. But as travelers, we're always on the move. It's not surprising that nobody knew we were coming. ये क्या हुआ? Though we still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, let Paimon introduce you to our new friends. Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great magician Linny and his assistant Lynette anywhere. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. If we discuss about the lore, maybe the weakest is gonna be the Noelle, but she's in training. भाई मैं कर रहा हूँ, it's debatable, highly debatable. It's an honor to meet you. Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big news? Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Ah, you're right. Seems you know me pretty well. What I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Diona, Benny weak है because of bad luck. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases, actually. You mean the serial disappearances of young women case? That's right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. Okay. I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked. And it's the headline story in the Steambird. Oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women case? You mean the culprit hasn't been found? Lynette is so cute. Lynette cute है. Lynette के अंदर बहुत ही ना कहते हैं ठहराव, एक सादगी टाइप का उसका लुक है और उसकी आवाज के अंदर. That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. Basically, Lynette is the opposite of Yoimiya. Exactly opposite. And ever since, after a period of time, ये क्या हो रहा है? मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा. ये अपने आप डायलॉग स्टार्ट हो रहा है. ऑटो पे भी नहीं है ये. The girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. देखो मैं टच भी नहीं कर रहा. ये देखो अपने आप कैसे चल रहा है? ये अपने आप नहीं चलनी चाहिए भाई. None of the girls have ever been found. अपने आप कैसे चल रही है? अपने आप नहीं चलना चाहिए. ऑटो पे भी नहीं है ये. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. ये Lynette robot है. Please don't imagine that, Lenny.
भाई मैं अब क्या अपने माथे पे टैटू करवा लूँ क्या कि स्पॉइलर मत दो? मैं वाकई में अब बैन करना शुरू करूंगा लोगों We're को। almost there. Look. अब तुम पूछ रहे हो तो उसका एक क्वेश्चन मार्क लगाओ ना। क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो पूछना बताने एक जैसा हो गया वो। नाइस कैमरा वर्क। Imagine if all people in Fontaine are robots. Arkhon भैया get ready to wet. उसके लिए तो I was born ready. Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay, Paimon hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. Sure. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. सीधा घर पहुंच गए। सीधा घर पहुंच गए। लाइव विनर्स हेलो। मैं भी तुम्हें मैसेज करने वाला था कि भाई तुमने पूछा स्ट्रीम कब है, फिर तुम आई नहीं। जल्दी से एलान बिल्ड कर दो भैया, स्पाइरल भी करना है भाई। अभी अपन आर्कॉन क्वेस्ट कर रहे हैं। आर्कॉन क्वेस्ट खत्म होने के बाद बाकी काम होंगे। और इस स्ट्रीम पे मैं कुछ और कर भी नहीं सकता क्योंकि इस स्ट्रीम में पीछे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो हम आ गए हैं कोर्ट ऑफ फॉन्टेन में। कोर्ट ऑफ फॉन्टेन तो ये पीछे स्ट्रीम रिकॉर्ड हो रही है ना, तो स्ट्रीम ज़्यादा लंबी होगी तो फाइल का साइज बढ़ेगा। तो मेरे पास अभी इतना वो नहीं है स्पेस हार्ड ड्राइव में। There is a serial killer in Fontaine named Sonny who will give you a quest after quest of Virgil, and Virgil of Sonny will meet you at the same place beside Statue of 7 near court. पहले यहाँ का स्टैचू ऑफ 7 मैं कर लेता हूँ, उसके बाद लेने के पास जाऊँगा। ओके, स्टैचू ऑफ 7 कहाँ है? स्टैचू 7 भी ऊपर ही होगा। अरे यार कटसीन आ गया। This is our current abode. Nice. Ah, Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. कल मेरे न्यू बिल्ड वॉन्डर में 75 के चार्ज अटैक मारा, टैलेंट लेवल 6 पर। क्या बात है, तुमने यार कर भी तो बहुत कुछ दिया ना उसके साथ। रिमाइंड्स मी ऑफ लवासा। लवासा, अच्छा समझ गया। मैं गया नहीं कभी लवासा। भाई नो स्पॉइलर लिख के पिन कर दो मैसेज। यार मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं मतलब कि हर 15 मिनट बोलता हूँ कि मुझे स्पॉइलर मत दो, स्पॉइलर मत दो, कुछ भी मत बताओ मुझे। लेट मी एक्सप्लोर द एरिया। मैं खुद पता लग जाएगा कि मुझे कौन कहाँ पे कैसे क्वेस्ट मिलेगी। इतने एक्साइटमेंट में मत बहो, मैं चैट पढ़ना बंद कर दूंगा, सीधी सी बात है। फिर तुम कहोगे कैसे स्ट्रीमर है चैट नहीं पढ़ता। Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Linny. Linny, could you come here for a moment? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? अब जाने का फायदा नहीं, लवासा खराब हो गया।
आप ओबीएस में लिख दो नो स्पॉइलर। यार सबको पता है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात होती है कि स्पॉइलर नहीं देना। मैं क्वेस्ट कर रहा हूँ तो नहीं देना चाहिए ना, लेकिन फिर भी लोग किसी ना किसी फॉर्म के अंदर ना कुछ बोल ऐसा बोल देते हैं, उनको लगता है कि स्पॉइलर थोड़ी था, पर उन्हें नहीं पता ना, जो बंदा क्वेस्ट कर रहा है उनके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। भाइयों के बीच में बड़ी सीक्रेट बात हो रही है। Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. अरे क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को, स्पॉइलर देके? ये परेशान करने वाली बात नहीं है। फिर फाइनली ये होगा कि मैं क्या कहते हैं टाइम आउट देना शुरू कर दूंगा आधे घंटे का। Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. बारिश शुरू हो गई। Looks like rain. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? सुमेरु का आर्कन क्वेस्ट हो गया Sure is weird. और तभी तो यहाँ पर आए हैं, बिना उसके कैसे आ जाएंगे? बिना उसके फॉन्टेन का आर्कन क्वेस्ट स्टार्ट ही नहीं होगी। I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. इसकी बातें अच्छे से सुनना, मेरी थ्योरी इस पे बेस्ड है। ओके What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. वाटर ड्रैगन तो वो था ना, वो कहते हैं कि जो हाइड्रो ड्रैगन है वो, अभी लोग न्यूबिलेट को कहने लगे कि मे बी न्यूबिलेट इज अ हाइड्रो ड्रैगन, लेकिन देयर इज अ थ्योरी दैट इट इज एक्चुअली कोकोमी हु इज द रीइंकार्नेशन ऑफ हाइड्रो ड्रैगन। When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I मैंने should कल yell चालू toward the किया, अभी sky काया at से the top मुलाकात of हुई my है। हाँ lungs. करो करो, बहुत बढ़िया क्वेस्ट है सुमेरु की आर्कन क्वेस्ट, बहुत बढ़िया। Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Hydro Dragon, don't cry! सोचो इस टाइम भी बंद हो जाए। Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. ये कोकोमी को याद कर रहा है। You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Sorry, it might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. After some time, the rain stops. It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Was there something you needed to do, Linny? Cyrus, HoYoverse second time देख रहा हूँ, one of my favorite anime. मैंने नहीं देखा अब तक। Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Oh, are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Romanticism, a concept unfamiliar to 90% of us. मतलब कि उसकी डेफिनेशन में भी अनफेमिलियर, लेकिन प्रैक्टिस बहुत लोग करते हैं। Romanticism actually has ruined some relationships in this world.
अरे कोकोमी तो इनाजुमा में होगी, सिर्फ रेन के लिए टेलीपोर्ट करके आएगी। मैंने गलती कर दी, जोंगली प्री फार्म करके एलान पुल कर दी। शाबाश। Perhaps we could trouble the What's up, traveler to Breeze? help us Welcome, take welcome. these Guys, like materials the to the jaldi se. Pomo workshop and deliver them to the owner there. I'm afraid that Fremine can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. No trouble at all. Don't worry, we're on the case. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need. This will be a walk in the park for us. Yep. अब पहले हम करेंगे अनलॉक स्टैचू ऑफ द सेवन। स्टैचू ऑफ द सेवन बहुत दूर नहीं है, जाना उसके पास ही वैसे हमें। ओके, तो आई गेस टीम में इसको लेने से बेटर है वॉन्डरर को ले लूँ और काजुआ को ले लूँ। ओके, चढ़ना पड़ेगा ना। स्टैचू ऑफ सेवन तक पहुंचने का कोई आसान तरीका नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चढ़ने का भी कोई ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे, कहीं से जहाँ से सीधा सीधा चढ़ा जा सके। अरे यहाँ तो फिर क्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ ऊपर है। लिफ्ट है, लिफ्ट कहाँ है? मेरा अल कचिंग बिल्ड नहीं हो रहा। अल कचिंग अबे ये तो वो है जो क्वेस्ट देती है। ये जल्दी अनलॉक होगी यहाँ पे। वाटर साइड पर है, अब इतना कौन सर्च करे यार। मैं तो यहीं चढ़ गया था। अब अपने पास ये है, वॉन्डरर है, तो अपने तो इनबिल्ट लिफ्ट है अपने अंदर। Too slow. सर आर्थर, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। Behold! वॉन्डरर काम का तो है, हाँ ट्रू। सबसे ज्यादा काम तो यही आता है। पहले इतना काम काजुआ आया करता था। Swan Fury. तो पानी के अंदर आती मेरा ये स्टेमिना बार नीला कैसे हो गया? कैमल की तरह है ना, मैं तो वहां से सायु लेकर गया था फर्स्ट स्टैचू 7 से। प्रतीक वेलकम। फुल मास्क है चीटिंग के। ये अपडेट में स्टोरी कंटेंट कितना टाइम का है? आई हैव नो आइडिया ब्रो। अबे यहाँ से नहीं चढ़ पा रहा मैं, यहाँ से जाना पड़ेगा लेफ्ट से। पहुंच गए, और यहाँ पे एक वर्ल्ड क्वेस्ट भी है। नाइस, अब आया ना मजा। अबे सारे के सारे अंडर हैं क्या? ये भी अंडर वाटर, 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 सारे अंडर वाटर हैं। सारे मोस्टली अंडर वाटर हैं। क्या बात है? अवेलेबल, अवेलेबल क्या अवेलेबल? ये वर्ल्ड क्वेस्ट, चलो वर्ल्ड क्वेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि आप डाइव कर सकते हो अब, इसलिए ब्लू है। अच्छा, कितना हुआ आर्कन क्वेस्ट? भाई ये भी चल रहा है। वर्ल्ड क्वेस्ट ले लेते हैं। वर्जिल VR2।
हेलो विवी, हेलो, आ गए। दे चेंज द स्टैमिना बार इन वाटर। हाँ इतना तो मुझे पता है, मैंने वीडियो बनाया है इसके ऊपर यार, मुझे तो पता ही हो गया। आज कोई बलि दी या नहीं? आज कोई बलि नहीं दी भाई, आज बलि की जरूरत ही नहीं है। आज मैं कौन सा कुछ पुल थोड़ी कर रहा हूँ। BRB, अभी तो तुम आए हो, अभी तुम जा रहे हो। लगता है सच में सोने गया भाई। पता नहीं क्या करता है, एक तो आता है इतनी देर में, फिर ऊपर से अभी आया वापस। लाइले क्रूसिस ट्रेजर, ये कौन सा है? वीवी वन पीस वाला, हाँ वही है, वही है, वही नाम रखा है इसने। यार सुमेरु को याद आ गई, ये क्वेस्ट है बिल्कुल उसके जैसा, 1 घंटे से एक जगह घूम रहा हूँ। कर दो भाई आर्टिफैक्ट। अगर तुम्हें लगता है कोई अच्छा आर्टिफैक्ट रोल करने लायक है तो कर दो। ऑल्दो मेरे पास खत्म हो चुका है आर्टिफैक्ट रोल करने के लिए। आज HSR, अरे हाँ आज HSR का लाइव स्ट्रीम है, कितने बजे है? अल कचिंग का बिल्ड पता है? अल हैतम का बिल्ड बता दो भाई कोई, ऐश्वरी को। वेट लेट मी प्रिपेयर फर्स्ट। हाँ 5 बजे है ना, ओके करूँगा। अब अपने को आर्कन क्वेस्ट करनी है पहले, ये बाद में लेंगे। ऐसे लाइव स्ट्रीम 5 बजे है या 5:30, डोंट नो। मैं 5 बजे ऑनलाइन आ जाऊंगा, हो गई तो होगी। अब ये नहीं पता यूट्यूब पे या ट्विच पे, वैसे यूट्यूब पे भी थी अभी तो वो बंदी है यार New customers? जो Looking to चोर थी। buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. नहीं वो नहीं है ये। Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... what were they called again? ब्रो फाउंटेन में एक फाउंटेन है जिससे आपको फर्स्ट रिवॉर्ड हाइड्रो सिजिल से एक रेजिन मिलेगा। देखेंगे, अभी पहले एक बार आर्कोन क्वेस्ट पूरी हो जाए, उसके बाद मैं फाउंटेन एक्सप्लोर करूंगा। अभी मैं फाउंटेन एक्सप्लोर कर ही नहीं रहा इसलिए। वेलकम बैक मिस्टर बीबी कुम, कहाँ चले गए थे? Ah, these must be for magic pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Wow. So, is Linny actually loaded? I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Hey! Is this machine what you Shubham, use to make welcome, stuff here? welcome. Good afternoon, good It's really afternoon. advanced.
गुड आफ्टरनून गाइस, किसने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक दबा देना. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology. And wasting is a kind of crime. जल्दी से लाइक दबा दो, ठोक दो लाइक, महाकाल का नाम लेकर लाइक ठोक दो. वी गॉट डेडिकेशन. बस यही तो चाहिए अपने को जीवन में. पिछली बार मैंने फॉन्टेन के लाइव स्ट्रीम 5:30 बजे अटेंड किया था क्योंकि पहली बार 5 बजे लाइव गया. लाइव स्ट्रीम 4 फॉन्टेन में मेरा मिस हुआ उस वक्त. नहीं, इस बार मैं 5 बजे ऑनलाइन आ जाऊँगा. अगर 5:30 होगी तो आधे घंटे तक अपना चिल मारेंगे, फिर 5:30 बजे लाइव स्ट्रीम देखेंगे. But where does a big machine like that get its power from? Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. लास्ट चैट कहाँ गई तुम्हारी लास्ट चैट? अरे कोई बिल्ड बता दो. मैं भी लाइक मुझे सब आता है, इसको नहीं आता. मैं उसको बिल्ड बिल्कुल दिखा दूंगा. समझा नहीं मैं. HSR का लाइव स्ट्रीम कब है? आज है या तो 5 या 5:30 बजे. Basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Huh? How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, when a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's ऐसे belief बोलते in हैं. justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. ऐसे लिया था नाम इसका, oratrice mécanique d'analyse cardinale. दोबारा बोलूं, oratrice mécanique d'analyse cardinale. ये इसका एक्चुअल नाम है. लोग इसको पढ़ेंगे oratrice mécanique d'analyse cardinale. नो, oratrice mécanique d'analyse cardinale. ऐसे. ट्रायल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉन्टेन. हाँ, इसी से एनर्जी जनरेट होती है, वही बता रही है ये. So that's what its other function is? Paimon heard that the oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Oh yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? कितना टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम है पावर जनरेट करने का. इन लोगों ने सोलर पैनल का नाम नहीं सुना. सोलर पैनल लगा लो, हाइड्रो पावर है, तुम्हारा हाइड्रो नेशन है, तुम एक क्या कहते हैं हाइड्रो से पावर क्रिएट कर सकते हो. क्या टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है पावर जनरेशन का यार. अरे कल से इतना ही आर्कन क्वेस्ट है भाई. कल तुमने देखा नहीं मेरा इंटरनेट बंद हो गया था, वरना ये तो मैं कर लेता कल ही. इम्बिबिटर को टाटा बाय बाय. जिंग ल्यू और टोपाज पता नहीं क्या लूं भाई. मैं तो इम्बिबिटर ही निकालने वाला हूँ. Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here Too you are on. chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a ये तो गुंडे लग रहे हैं. इनको इनकी पिटाई होगी अभी. सर मेरी शंगलिंग देख लो भाई आर्कन क्वेस्ट के बाद. एक्चुअली क्या मैं तुम्हें दिखा दूँ, ये वाली जो वीडियो चल रहा है ना, इसको मैं पीछे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता क्योंकि मेरे पीसी में स्पेस खत्म हो जाएगा. तो ये स्ट्रीम के साथ साथ मेरा OBS रिकॉर्ड भी कर रहा है, पर मैं देखूंगा. You again? Didn't I already promise you that I'd have the miHoYo to Conferee of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. इनकी पिटाई का टाइम आ गया. Huh? You. Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? लो जी, वेलकम मिस्टर बच्चा. बच्चा आ गया अपना. If Conferee of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances?
What are the chances exactly? We're मैं भी surprised to सोच see रहा you हूँ. too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? We sure seem to have run into a lot of friends today. Is he really our friend? हम हफ्ते में एक बार इससे लड़ते हैं जाके. Fontaine really is a curious place. चलो friend बोल देते हैं. Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. सच्चे दोस्तों से लड़ाई होती है. सही बात है. ईश्वरी ने बहुत गहरी बात बोल दी. ब्लेड का बाउंटी 8 बिलियन है ना शायद. हाँ बिलियंस में है. भैया पीक में लड़ते हो एक बार, मैं तो इसको कूटने जाता हूँ. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. Boy. You want your Mora? Fine. Why don't you come and take it? Oh God. इतना ज़्यादा क्लीशे हो गया ना ये. हाँ चल भाई. Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said, Hey! That's way over the line! All right, boys! Let's see who has to pay up now! All right, boys. Let's see us to pay up now. Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. Oh, तो हमारा जो चाइल्ड है ये बेचारा बैंक का वो रिकवरी एजेंट बना हुआ है. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take long. चाइल्ड से लड़ूंगा मैं. चाइल्ड बन के. Okay. Shouldn't let your guard down. अरे. The wind rises. Oh, चलो I'm off to watch One Piece. Okay जी. If you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank. Wait. Don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Huh? अरे. Now's my chance! ये क्या हुआ? Huh. That was weird. इसके विजन ने मैलफंक्शन किया. विजन को जरा ऑफ करके ऑन करो दोबारा. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? Child भी like. I've ever heard of someone losing control of their vision. चाइल्ड भी लाइक 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, तो 36 लाख का घाटा कैसे हुआ? Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Bro, ये तो मैंने पहली बार देखा. विजन का कंट्रोल लूज है. विजन एक तरीके से स्टटर मारी है इसकी. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Okay, that's sus. Maybe you losing control
control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. ये तो पता है हमें. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. ये भी पता है मुझे. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. It? Okay. Setting up the story, mysterious story. स्कर्क कौन? स्कर्क जो थी चाइल्ड की ट्रेनर थी. चाइल्ड इसने बताया ना, जब वो 14 साल का था तो अबिस में गिर गया था और वहाँ पर इसने ट्रेनिंग ली थी. तो जो भी इसको लड़ना आता है वहाँ से, तो वहाँ पे जो इसकी मास्टर थी उसका नाम था स्कर्क. But what is it? What did you awaken? She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. Okay, please explain. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. Okay. अब तो इंट्रोड्यूस नहीं हुई होगी. हाँ, मतलब स्कर्क के बारे में हमें पहले से पता है, इसके कैरेक्टर स्टोरी के अंदर है, लेकिन इसने मुंह से पहली बार बात अब की है इसके बारे में. स्कर्क फ्लोर 13 पे आएगा. अब इसके स्कर्क को शायद डेनस्लेव पहचानता है, वो अब इस ऑर्डर से रिलेटेड होगी. मे बी, लेट्स सी. Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? Maybe. That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. चाइल्ड वेल तो है, असली वेल है अल्ट्रा. हमारा C3 येलान और C6 बेनी वाला. बैंक है उसके पास चाइल्ड अब्यूज वेल. नहीं, बैंक नॉर्थलैंड बैंक इसका थोड़ी है. नॉर्थलैंड बैंक तो पेंटालोने का है. हमारा वेल कहाँ है? आज सो रहा होगा. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? उसका कॉन्स्टलेशन भी वेल है शायद. नहीं, चाइल्ड का कॉन्स्टलेशन वेल नहीं है. चाइल्ड का कॉन्स्टलेशन नारवॉल. नारवॉल एक तरीके की डॉल्फिन है, इसके आगे वो निकला होता है. बेसिकली पानी की यूनिकॉर्न. मतलब बैंक ब्रांच कुछ नहीं है इसके पास. बैंक, ये बैंक में बैंक से बस क्योंकि फटुई का बैंक है इसलिए ये इन्वॉल्व है, लेकिन बैंक इसका नहीं है. No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. Okay. The champion duelists are all powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. तो फिर ये तो हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे. And the worst case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death.
So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Karenge, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Karenge. Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? क्यों इसने विजन क्यों पकड़ा दी? कमाल है. I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better off without it for now. अच्छा, इसीलिए हमें जब ट्रेलर के अंदर चाइल्ड दिखा तो चाइल्ड को विजन नहीं दिखी थी, इसलिए नहीं दिखी थी. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? चाइल्ड अब इलेक्ट्रोविजन यूज करेगा. इलेक्ट्रोविजन नहीं, इलेक्ट्रो डिल्यूजन. Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now, we Master, might as well walk welcome. around and see the city before Lenny's performance. वेलकम वेलकम वेलकम. मेरे ख्याल से अब विजन नहीं चलेगा, डिल्यूजन. हाँ, इन्वेंट्री आइटम्स चेक करो गेम में. ओके. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Whew. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are amazing! The whodunits here in Fontaine Rishu, are a lot different welcome, than the hello. light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more, well, novel. गाइस लाइक दबा देना अगर किसी ने नहीं किया अभी तक तो. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. Hey, shouldn't we be heading to the opera house to see Linny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. Linny said that the opera house is on Aranias, so let's go ride the aqua bus. ओके. मुझे बोला ये चेक करने के लिए. इन्वेंट्री क्या चेक करूं इन्वेंट्री के अंदर? अब स्पॉइलर बंद करो यार. अब कौन सा स्पॉइलर दिया किसी ने? अब वॉन्डर को राइडन को ले लाओ बस फॉन्टेन में. अब क्रिस्टोफर आई पकड़ने का गैजेट मिल रहा है रेपुटेशन से. अच्छा, फिर तो यार ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी. क्वेस्ट आइटम्स, फूड मटेरियल्स, गैजेट्स, क्वेस्ट आइटम. ये क्वेस्ट आइटम है. ओह, चाइल्ड्स विजन. It appears as if child lost control of the elemental power within it before. The vision has lost its glow now and its owner has left it behind. Lost its glow यानी कि विजन बंद हो गई है. पर बंद विजन तो वो हो जाती है, क्या कहते हैं, जैसे कि काजुआ के दोस्त की विजन थी. जो विजन इनएक्टिव हो गई थी तो उसका वो खत्म हो गया था, वो ग्रे कलर की हो गई थी. ये तो अभी भी ब्लू है. कैसा लगा आर्कन क्वेस्ट? अभी तो चल रहा है दोस्त, अभी तो चल रहा है. कहाँ जाना है? ऊपर.
रीच द नाविया लाइन एंड हेड टू एरिनिस। ओके, नाविया लाइन उधर है, यहाँ जाना है तो ऊपर से चलते हैं ना। Squall and Fury. भैया वो अभी भी बंद हुआ है ना, इसलिए ब्लू के कुछ टाइम बाद हो जाएगा ग्रे। अच्छा, अरीना नहीं, काजुआ के फ्रेंड का ब्लॉक, हाँ वो हो गया था, ग्रे हो गई थी। भाई मुझे ग्राइंड करना गेंशिन पर टाइम नहीं मिलता, क्या कर सकता हूँ यार मैं। अरे पानी में गिर गया। आई एम गुड। व्हेन डज द इमीडिएटली, ओके लेट्स गो। Welcome to the Navia line. I am Elfan. इतनी थकी हुई The क्यों boat है? will be departing imminently. Please do not stick your head, hands, or other body parts outside the boat. The Aquabus operator is not responsible for Guys, any like कर देना किसी ने नहीं किया अब accidents तक or तो। injuries resulting from doing so. Also, please remember to buy the Steambird, though I don't read it myself. बट फॉन्टेन के पहाड़ बहुत ज़्यादा पॉइंटी है, मतलब बिल्कुल चोंच वाले पहाड़ हैं The फॉन्टेन में। destination of the current tour is Arenias. Points of interest worth visiting include the Fountain of Lucine and the Opera Epiclese. If 5-6 you घंटे look का to the Arkhon quest। left in the direction we are currently traveling, you will see the famous Fontaine Research Institute up in the sky. कहाँ? An वो experiment है Research gone wrong Institute। turned a new sightseeing opportunity. Human ingenuity truly is a wondrous thing. वाह, वो इतना हवा में बना हुआ है रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो मैं चलता हूँ, पढ़ना है। ओके भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। मेट्रो की याद आ रही है इसमें, तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं। अगला स्टेशन ओपेरा एक्पिक्लेप्स है। दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे, कृपया अश्लील टिकटॉक ना बनाएं, We're धन्यवाद। now approaching our final destination. Please be sure to bring all your personal belongings with you as you disembark. दिल्ली मेट्रो Even में though I will आपका take any स्वागत forgotten items to the lost and found, the paperwork is rather annoying, as Melusine hands are not suitable for grasping pens. है। फनी है ये। Please be careful when disembarking. It has been my honor to be your tour guide this trip. Thank Careful, you. I'll be careful. Here is me being careful. Here is me being careful. वेलकम टू फॉन्टेन। पहले एक को बस राइट ले ली, अभी किधर जाने का है? Quit following me. फॉन्टेन बड़ा ही क्या कहते हैं, बिल्कुल फॉन्टेन के अंदर पता है जो फीलिंग आ रही है मुझे कैसी फीलिंग आ रही है मैं बताता हूँ। मुझे फॉन्टेन के अंदर ना मॉन्स्टेट वाली फीलिंग आ रही है, लिटरली। जैसे मॉन्स्टेट की फीलिंग आती थी ना शांति की, वो फीलिंग आ रही है। ये क्या है? एंटर, ये इनका नया वो है क्या? ओह, अरे क्या बिल्कुल कहाँ लेके जाएगा? तो Too slow. मैं आज तक मेट्रो में बैठा ही नहीं। आओ मेट्रो में बैठाएंगे। फॉन्टेन बोन से भरा पड़ा है, अंडर वाटर भी। मैं जरा मैप खोल लेता हूँ और लगे हाथ मार्क करते रहता हूँ कहाँ कहाँ मुझे हाइड्रोक्लस मिल गया है, ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो। अभी मैं कहाँ पर हूँ? मार्कॉट स्टेशन। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये हाइड्रोक्लस मिल गया मुझे। मार्कस फाउंड। अपने को जाना है यहाँ। ये है ओपेरा फाउंटेन ऑफ ल्यूसीन। ओके कूल। मेरी शांगलिंग देख लो अब। अरे भाई शांगलिंग ही लगा रखी खाली। 49 238 बहुत सही, बहुत सही। 4 पीस एम्ब्लेम बहुत बढ़िया। बिल्ड 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 बिल्ड, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पायरोनेटो को बढ़ा दो, गोबा को बढ़ा दो,
इन दो को क्राउन कर दो, पायरोनेडो तो 100% क्राउन करो, बाकी तुम्हारी शांगलिंग मस्त बन गई है, कोई दिक्कत नहीं। There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. अपने को जाना है वहां पे, लेकिन अब तक कोई ना एनिमी नजर नहीं आया। तुम्हें आया क्या जिससे लड़ा जा सके? ऐसा कोई एनिमी आया नहीं अब तक नजर। इनाजुमा में तो घुसते इतने एनिमीज नजर आए थे अपने को। ये क्या है? The mystical crystal construct seems to have originally been designed to test the dampness of its surrounding, but seems that can detect its own dampness. Effect by hydro, maybe something nice. Okay, okay, cool. बाद में देखेंगे इसको, पहले आर्कन क्वेस्ट करनी है। ल्यूई लोटस बड़ी जल्दी रिव्यू हो गया। अब और क्या मैं निहारूं तुम्हारी उसको बैठ के, और कैसे देखूं? तुम्हारे वो देख लिए, रेशियो देख लिया, 238% तुम्हारा ER लेवल है, इट्स गुड इनफ। कॉन्स्टलेशन तुम्हारे C6 है, कैच तुमने पकड़ाया हुआ है, अब और कुछ करने की जरूरत ही नहीं उसके अंदर। अब क्या मैं ऐसे निहारूं तुम्हारी शांगलिंग को बैठ के? हाँ शांगलिंग। गोवा को अप करना होता है, क्यों कर लो भाई। गोवा भी अटैक, एवरी बिट ऑफ अटैक दैट यू कैन गेट आउट, ठीक है, उस अटैक को निकालो ना बाहर। गोवा को छोड़ के क्या करोगे लेवल 2 के ऊपर? मार्क आर्ट स्टेशन है, ये कहां से आ गया? फ्रेंड में जगह है, फ्रेंड में जगह है मतलब अच्छा निहारूं, निहारने के पैसे अलग लगेंगे। मेरी 30 मिनट की ट्रेनिंग का रेट अभी 40 लाख रुपए चल रहा है और GST अलग से लगता है। मैं बहुत महंगा इंसान हूं। वैसे यार एक बात है, जैसे जैसे नए एरियाज अनवील होते जा रहे हैं ना, फॉन्टेन, सुमेरु, उन सब के हिसाब से मॉन्सेट काफी गरीब सा नहीं लगता देखने में, कि कुछ भी नहीं है, किला सा बना रखा चारों तरफ, उसके अंदर लोग रह रहे हैं। गिनती की 4 दुकानें या 10-15 घर हैं मॉन्सेट के अंदर। मतलब मॉन्सेट बड़ा प्रिमिटिव सा लगता है। ये देखो कितना पैसा है इनके पास। इतने रेट में तो अल्ट्रा भी नहीं करवा पाएगा। अल्ट्रा के साथ जो भी रिसेंटली हुआ ना इतने रेट में, अब वो कुछ भी नहीं करा सकता। वो लुट चुका है पूरे तरीके से। 40,000 रुपए भाई वो FD में डालता ना तो 5 साल के बाद जाके सारे कैरेक्टर बिल्ड कर लेता। Oh Archon, please bless us with a bright and healthy child. We pray. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful life. True. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. जूलियत, इसका क्या नाम है? ये तो लड़के का नाम जूलियत कैसे? लड़की का नाम जूलियत होना चाहिए। कबूतर देख रहे हो? This is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. Vache. हैं? ओ निकोल, निकोल बात कर रही है हमसे। What's wrong? Vache. ये निकोल है जिसने हमसे उसमें बात किया था, सुमेरु आर्कन क्वेस्ट के बाद बात किया था। No, Paimon didn't say anything. Are you hearing things? लेकिन लास्ट टाइम उस वॉइस को पाइमॉन ने भी सुना था, इस बार खाली इसको सुनाई कैसे दे रही है? That's interesting. अल्ट्रा को तो ऐसा कर दिया है उस बंदे ने, अकाउंट वो खुद ने रिव्यू करवाया अभी तो। निकोल कौन? अरे तुमने सुमेरु क्वेस्ट नहीं की? सुमेरु क्वेस्ट की है ना? सुमेरु के लास्ट में एक लेडी है जो ट्रैवलर और पाइमॉन से बात करती है, वॉइस इन द हेड बन के, याद है? वो हेक्सन सर्कल की विच है, निकोल। Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. Okay. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. Lynette, you scared Paimon. बड़ी देर में डरी है। How did you get here? Lenny asked me to wait here for you. Remember? Right.
What do you mean? There are a lot of people here right now. अच्छा, voice was coming from Fontaine. Maybe I'm wrong कि हो सकता है वो ना हो ये. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, it's the middle of the day. It's not the time for eerie things. I see. I might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. Others in my family have had similar experiences. It's because of his sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with elemental power? I wanna touch Lynette's cat ear. She's so cute. तो फिर किसी वहाँ जाओ, वो होते हैं ना, अरे यार, cosplay events, वहाँ पे कर पाओगे. When do you cry, Paimon? Wait, what? What does that have to do with anything? Just answer me. When do you cry? मैंने कभी रोते नहीं देखा पाइमॉन को. When Paimon's really sad? Oh, and when Paimon's super happy. Oh, and also when Paimon's really, really scared. Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. एक बार निंगवांग से सेटिंग हो जाए. मुझसे कोई पूछता ना कि नेम वन कैरेक्टर यू वुड लाइक टू मैरी, मतलब मैं योई में बोलता हूँ, लेकिन अगर सच बोलूँ ना, अगर किसी से भी शादी करने का ऑप्शन मिले गेंशिन इंपैक्ट में, तो निंगवांग से शादी कर लो. रिचेस्ट पर्सन इन तेवात. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. So, what did the voice say? Huh. If you were hearing their emotions, then Paimon wonders what happened to them. Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. So chatting with Linny might help him relax a little. पूरा चैट तो पढ़ लो भैया. हाँ, मैंने पढ़ लिया. जेड चेम्बर अपने नाम करवाऊंगा. पढ़ लिया. Oh, right. That makes sense. Let's go in and see Linny. कहाँ है लेनी? The wind rises. इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा अंदर से मुझे. Traveler and Paimon, good to see you. I knew you two would come. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. We've been looking forward to it. इस बहाने ईरान, गानी और कचिंग भी आसपास ही होंगे. वाह, मतलब कि ख्याल ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं. I can tell, judging by how early you've arrived. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now is the perfect chance for us to take you to the best seats in the house. Wait just a moment, I'll fetch the tickets. अरे हमें भी The बताओ Opera क्या बात House कर has रहे हो? assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved your seats, and here are your tickets. जोंगली भी आसपास ही होगा, वाइन मांगेगा आपसे. मैजिक शो, यस, सब देखते हैं कैसे मैजिक शो होता है. Ooh, front row seats. Thanks, Linny. Don't mention it. There's no need to keep thanking me. Hey, Linny, could you come over here and take a look at this? Cowell. Oh, I'll be right there. Simon Cowell वाला Seems Cowell. There's an issue with the stage props over there. That's Cowell, my assistant, calling me. I'll go lend him a hand. Yeah, we'll just go to our seats. You go ahead, Linny. डीप भाई नो स्पॉइलर. अब डीप ने कौन सा स्पॉइलर दिया? ये तो बोल रहा है मैजिक शो, तो हमें ही पता है मैजिक शो होने वाला है. किधर जाने का है? अंदर, ऊपर चलें पहले. Follow me. ओ, ये हुई ना बात. वाओ, और वो रहा स्टेज. क्या बात है. हम सबसे पहले पहुंच गए क्या यहाँ पे?
कोई तो बैठा हुआ है नीचे यार अभी तक। अरे ना मैजिक शो है ये तो बताया ही है लिनी ने, कौन सा स्पॉइलर होगा। हाँ यस, कोई तो बैठा हुआ है नीचे, ये हवा में उड़ती रहेगी। ओह न्यूविलेट, जज साहब। Hey, traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Since there's you little. Of course you put this on Paimon. Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Oh, that is what you would call a gentleman. Oh, so you heard all of that, did ya? Boy, you sure have good ears. Paimon thought she was keeping her voice down. Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. So let's talk. But what should we talk about? काश न्यूविलेट लड़की होता। भाई अच्छी बात है, लड़की नहीं है, लड़का है। कुछ ज्यादा ही वाइफू वाइफू होने लगा था इस गेम के अंदर। पाइमोन ने गले का पट्टा कहाँ गया? वो बस उस टाइम के लिए था, गायब हो गया। Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too? A friend, you say? Well, if Mr. Linny would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. इसमें जोंगली वाली वाइब्स आ रही हैं। Oh, so you're not friends with Linny then? Oh, this is getting more awkward by the second. Paimon nearly forgot to make her introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Tevat, and as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am... Oh, Monsieur Nervilet. What an honor it is to have you here to see my show. Nervilet. Ah, Mr. Linny. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. वाइब तो है बट जोंगली ज्यादा ना। I don't agree. जोंगली की वाइब भाई अलग ही है। Wait, Nervilet? Could he be? I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Nervilet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. अच्छा, जोंगली के ज्यादा बेटर वाइब्स हैं। मैंने पढ़ा जोंगली से ज्यादा बेटर वाइब्स है। Sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to, there's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. Okay. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise, she may become flustered. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfied look on her face. Guess she has no idea that you saw right through her act. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. भाई इसका कुछ क्या कहते हैं वो चल रहा है क्या? झगड़ा चल रहा है क्या हाइड्रो आर्कॉन से? Huh? So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? वही तो मैंने कहा. All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations and the performance will start as soon as the audience has made their way to their seats. Yay! The show's finally about to start! Paimon can hardly wait! Paimon's never seen a real live magic show before! जोंगली आसपास होता है दो टाइप के सीन होते हैं, या तो ज्ञान देगा या पैसे खर्च करवाएगा. हाइड्रो आर्कन को पूछता ही नहीं है, ऐसा नहीं है कोई पूछता नहीं, हाइड्रो आर्कन को पूछते हैं. वो शी वाज फेमस, वो जब पीयर पे आई थी तब कितने लोग ताली बजा रहे थे, तो शी इज फेमस, ऐसी बात नहीं है. Sorry.
Paimon will try to stay quiet. Welcome, one and all, to the Opera Epicles. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. ये अपनी विजन पकड़ा रहे हैं. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear Oh, cutscene इतनी or जल्दी? appear. The possibilities are endless. नेक्स्ट टाइम आर्कॉन फर्स्ट डे से नेक्स्ट टाइम मैं वेट नहीं करूंगा. नेक्स्ट टाइम आर्कॉन क्वेस्ट जैसे आएगी ना मैं पहले स्टार्ट कर दूंगा. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. Okay. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Dark Soul, welcome. ये कपड़े रह गए. Lynette, are you still there? Don't go too far. ये कपड़े We तो ले don't जाती want है to अपने. use up all our magic. Hi, I'm back. दूसरे कपड़े पहनाई. क्लैपिंग हो जाए. वाह जी वाह, क्लैपिंग हो जाए. अच्छा वो विजन नहीं थी, नहीं तो गर्म पानी में उबाल देता लिनेट को. What in the world just happened? How did he do that? Paimon didn't seem to do anything. Wasn't Lynette inside the water tank? How did she disappear and then reappear out of nowhere? If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught up in trying to see that which has been intentionally hidden. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette reappeared.
Amazing! Thank you, everyone. I'm glad you enjoyed that performance. But our magical journey has only just begun. Okay. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant after all. In which case, I have ample time to make all necessary preparations. Okay. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Okay. Please, if my assistants could bring out the magical boxes now. There are Paimon two ko le jao. boxes and only two boxes. One is here, and one is there in the aisle among the audience. I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next magic trick. A swap! Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance to make a move. Wow! How's he gonna do this? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? चुप हो जा पाइमॉन. The lucky audience member will be generated by this random number selector. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. Now then, let's begin. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand for an entire minute. Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. कभी-कभी तो पाइमॉन ठीक रहे, मतलब कि ऐसा नहीं है, पर कभी-कभी इरिटेटिंग लगती है. Cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. You don't need to do anything, but no matter what strange things may happen, don't come out of the box. मैं तो कहता हूँ उसको गायब करके अडल्ट बना दो, फिर मजा आएगा. बड़ा अजीब सा लगेगा पाइमॉन जो है ग्रोन अप हो जाए बिल्कुल. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the fortress of Meropide. Oh, okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Could you all give me a countdown? Like this. 60, 59, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voices to know when time is up. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Okay. Ooh, Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that. No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after me. Anime show तो ग्रोन अप हो जाते हैं, exactly. 59, 58, 60, 59, 58. That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. 54, 53, 52? Why aren't you counting, Nervalet? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Oh, all right. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 38. Mr. Linney, are you all right in there? Is everything ready? Yes, I'm fine. I'm just double-checking the direction of the magic. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, mid-air right above the audience. Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. Bong. What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25, 24, 23. What's wrong, Mr. Linney? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right.
Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20 seconds. Hear them counting? 19, 18, 17. It seems things aren't quite going as planned. I apologize, everyone. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long countdown. 10 seconds and change is still plenty of time. 10. Almost there now. Okay. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7. Hey, slow down! Honestly! 5. 4. 3. Whoops! That doesn't count! 0. Ta-da! बंदी गायब हो गई। वो बंदा मर गया। वो जिसका असिस्टेंट था वो। What the hell? Huh? Is this part of the show? Mr. Lenny, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Bro, shit just hit the fan. Lynette कहाँ है? Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of Justice. ये कुछ ज़्यादा ही मेरे को वैसा सीन लग रही बंदी जैसे कि she is not too sure about herself. मतलब कि जैसे कि ये न्यूविलेट से थोड़ी सी इंटिमिडेटेड है। मतलब इसको बार बार बताना पड़ रहा है कि आई एम द गॉड ऑफ जस्टिस, आई एम द गॉड ऑफ जस्टिस, और कोई भी दूसरा गॉड ऐसे नहीं बोलता। शी इज जस्ट एक अगर किसी ने यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो गेम ऑफ थ्रोन्स में एक सीन है जिसमें जो जॉफरी ऑफ वार्बर बोलता है आई एम द किंग, आई एम द किंग, और उसका जो ग्रैंडफादर है वो उसके ऊपर आता है और बोलता है एनी मैन हु हैज़ टू से दैट ही इज द किंग इज नो ट्रू किंग। लिनेट तो टड़ा कर रही होगी। अरे कौन सी टड़ा कर रही है भाई? कहाँ? मतलब कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बंदा मर गया है भाई एक। No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, one of the assistants in Linny's magic troupe. भाई साहब बंदा मर गया। His name was Cowell. Cowell बॉक्स के अंदर कैसे था? बॉक्स के अंदर तो वो बंदी थी ना जिसको जो मेंबर थी। Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. Oh, so it was an accident. As of now, we are still not sure why we found Cowell in the box. Yes, why? Rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. Ooh. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance, and there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. Ooh. The serial disappearances case? That's the case that Charlotte mentioned before. I know the truth. I can see through the whole thing. Oh, really? Using
such a shallow and obvious mystery as his finale. Did he really underestimate us that badly? I say that our powerful magician, Mr. Linney, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Huh? Why me? This whole thing was an accident. No, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? The deceased is one of your assistants, is he not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. Bro, वैसे एक बात है, वॉइस एक्टर ने काम बड़ा जबरदस्त किया इसकी वॉइस के ऊपर. That can't be right. How can Lenny do this? He was in the box on the stage the entire time. We could even hear his voice. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linney and his associates, and that you are pressing charges? Huh? I just think that he... Well, I think it might be a little early to talk about formally pressing charges. क्या personality है ये? She is not sure about herself. But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's gonna personally deliver justice. इतना नाटक है, इसको ही डाल देते हैं डब्बे में टैंक को. A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady Farina said it all. I mean, of course, my dear people. But what excites me even more than the obvious truth before our eyes is the opponent I'll be facing. That's right. I mean you, traveler. You'll support Lenny, won't you? After all, he भाई जब से आया हूँ, you the first time we met. जब से आया हूँ तब से मेरे पीछे पड़ी है, बहाना निकाल रही है मुझसे लड़ने के लिए. आर्कॉन ने रिस्पेक्ट करो. अरे भाड़ में गई, आर्कॉन ने क्या रिस्पेक्ट करूं उसकी मैं? पहली आर्कॉन है जिसके लिए मन से रिस्पेक्ट नहीं निकल रही. आर्कॉन जैसा बिहेव तो करे, बच्चों जैसा बिहेव कर रही है. रॉयल रेवन वेलकम आफ्टर सो लॉन्ग, और मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रही है. Then there's no problem at all. You know, the Traveler and I already had a duel the first time we met. But with Lenny's help, our little duel ended in a draw. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place to hold such a riveting showdown and decide the true victor than here, on the grandest of stages, the Opera Epiclese. बच्ची ही है वो. अरे यार, आर्कॉन होती है, बच्ची क्या है? तो नाहिदा भी बच्ची है. टेक्निकली शी इज अ चाइल्ड इन आर्कॉन एज, बट कितनी समझदार है. दिस आर्कॉन इज एन अननोइंग जोक, दैट्स इट. स्पाइरल अबिस लवर इज इक्वल टू BDS. आई एग्री. इससे छोटी तो नाहिदा है, 1000 गुना समझदार है. वही मैं कह रहा हूँ. अब 2 अपडेट बाद ट्रैवलर आर्कॉन से ही हेल्प मांगेगा फटू हार्बिंजर से लड़ने के लिए. वो लेट्स सी क्या होता है आगे. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, I would like to ask you, are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? Ooh, अब मैं वकालत करूंगा. My lord, I would like to appeal, my lord, Mr. Judge साहब, Your Honor. मेरे मुवक्किल ने किसी को नहीं मारा है. Nahida is more Archon than this blue joke. Even I was annoyed. I'm not annoyed by her. I'm just मुझे उसकी पर्सनालिटी ना वो समझ नहीं आ रही कि मेरे जैसे होता है ना कि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम. पता है ना तुम लोगों को? कुछ लोग लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन उनको अंदर अंदर ऐसा लगता है कि यार जो मैंने अचीव किया है ना, आई डोंट एक्चुअली डिजर्व दिस. तो वो लोग ना बड़े दबे से रहते हैं दूसरे लोगों के सामने. वो अपनी पर्सनालिटी को आगे नहीं आने देते. वो बेसिक ना अल्फा की तरह बिहेव नहीं करते, बीटा की तरह बिहेव करते हैं.
तो ये आर्कॉन वैसी सी लग रही है कि शी हैज़ टू से कि आई एम द गॉड ऑफ जस्टिस, ये सारी चीज़ें वो बोल रही है, ये सारी चीज़ें बोलने वाली नहीं होती। न्यू विलेट वुड मेक अ बेटर हाइड्रो आर्कॉन फ्रॉम फाइंडिंग देयर सिबलिंग टू लॉयर सिमुलेटर। ये तो वो वाला गेम हो गया, लॉयर वाला गेम नहीं वो वाला। कौन सा गेम है यार? एक गेम है लॉयर वाला। Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth. Linny and his troupe are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot outlander can build in such a short amount of time. I'm really quite looking forward to hearing it. अरे एक वीडियो गेम है जिसमें वो लॉयर वाला काम करना होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस है, जिसमें वो मीम नहीं होता ऑब्जेक्शन, वो वाला जो मीम है। We can make a web series out of this quest alone. सही बात है। Sorry about everything that happened just now. Were you frightened? Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? Yeah, I'm a little shaken up myself. How could this happen? And poor Cal. नाहिदा को बताया इसके बारे, बट टाइम तो वॉन्डर को भेज दे सकती इसकी सुपारी लेके। वैसे पता नाहिदा ने बोला था कि हाइड्रो आर्कॉन शी इज अ लिटिल एक्सेंट्रिक, शी इज नॉट लाइक टोटली इन हर हेड। तो हमें पहले से पता था कि ये ऐसी होने वाली है, बट स्टिल इट्स अ लिटिल जारिंग। I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the murderer? Good to hear. Thank you so much for trusting me. भाई हम तुम्हारे वकील हैं, हमें तो नो बोलना ही पड़ेगा ना। आर्कॉन को स्पॉइलर देने का मन कर रहा है। Just kidding, I always say this but never do. Good boy. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is confusion. हाँ यार, मतलब कि बंदा मार दिया। मतलब this story of Genshin Impact is getting very dark day by every quest. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. And I don't know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what they did. Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. What the hell? Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ पाइमॉन को ऐसे देख के। ब्रो नाउ यू सी मी मूवी, हाँ वो देखी है फिल्म मैंने। ब्रीज वेलकम बैक। फॉन्टेन हैज सम इंटरेस्टिंग वर्ल्ड क्वेस्ट, गुड एक्सप्लोरेशन। फिनिक्स राइट वो लॉयर वाला, हाँ वही वाला, वो गेम, उस गेम का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ये सही लग रहा है, पाइमॉन पर जोकर ही है वैसे भी। हाँ ये तो है। Don't worry, Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. तुम्हारे ट्रैवल फंड है कहाँ पे? लेकर कहाँ घूम रहे हो इतना सारा मोरा तुम? I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. यार लिनेट वो काफी सही है यार। That's the right attitude. अच्छा पैरालैक्स से होटल हॉस्टल जा रहा था ना, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? I need to get back to my normal self. गाइज लाइक कर देना अगर किसी ने अब तक लाइक ना किया हो तो, भूल गए हो मेरी खूबसूरत शक्ल देख के। लोग होता है भूल जाते हैं, यहाँ आते हैं और मेरी खूबसूरती देख के इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं। But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be counting on you. वो हॉस्टल काम हो गया पर घर वापस आना पड़ेगा, 20th में जाऊंगा। ओके। Yes, thank you so much. Yeah, just leave it to us. Oh, since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance?
Ah, well, I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. The secrets behind our magic are past saving, Linny. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during the trial. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in perfecting it. Now I'm immune to my homies' charm in day, can't say about night. You can't charm me. Okay. I'll try though. क्या ही करूं, आरखूनी भाई के खूनी आंखों में डूब ही जाते हैं। वाह। पैरलेक्स 2 दिन बाद ही 20 इसके घर क्यों आ गया? हाँ वही तो घर वहीं रह लेता, ट्रेन स्टेशन बस स्टेशन कहीं भी सो जाता 2 दिन तक, है ना? But if revealing our अच्छा secrets फिनिक्स will help राइट you है वो uncover लॉयर the वाले गेम truth का नाम। behind what अच्छा happened, then it will be well worth it. We should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime, you can go investigate the stage and the seating areas. Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Detective Paimon is on the case! Hello, officer. How's the investigation going? I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a 20 mess. likes, thank you so much. Huh? What do you mean? ये चश्मा पहन के रखेगी, उतारेगी नहीं? सब लोग जोकर बने हुए हैं इस वर्ल्ड के अंदर, न्यू विलेट को छोड़ के। Come with me and you'll see. Asmond. The deceased is one of Linny's assistants named Cal. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowl inside it. This is the real mystery. We've already searched the scene and we're unable to find any traces of the girl. जमीन पे क्या निशान बनाया? वो किसी आदमी का निशान लग रहा था जो चौक लाइन बनाई हुई है। A lot of crying in Fontaine story को ऐसा है क्या? अब तक तो ऐसा मुझे सब जोकर वाला लग रहा है सब कुछ। However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. But he doesn't have a motive! Are you both good friends of his? Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. ए मकर तोंडिया ये चल गया ना तो सपट हो जाएगा पपट हो जाएगा। मैं समझा नहीं भाई। वो हॉस्टल अलॉटमेंट होते हैं 8:30 हो गए और वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बहुत लोग घर वापस आ गए। अच्छा ओह So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. That's true. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence. आपने खट्टा मीठा मूवी नहीं देखी है? कौन सी वाली खट्टा मीठा? वो अक्षय कुमार जॉनी लीवर वाली जिसमें वो कॉन्ट्रैक्टर होता है। You can use the case records to confirm your current evidence and clue collection situation and solve case related information. Okay. Okay. Use the perception skill to find evidence and clues that can be investigated with a certain radius around yourself. This will advance you overall progress. Okay. वही वाली मैंने एक बार देखी, उसके बाद नहीं देखी, तो इतना नहीं देखी कि उसका डायलॉग याद हो जाए। बस उसका एक ही डायलॉग याद है मुझे, नहीं ये भी मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है। वो बस वो याद है मुझे क्योंकि वो मीम्स में बहुत देखा है मैंने।
Guards investigation report. The investigation guards indicate the firework launched at the tail end of the magic performance at the rope dangling the water tank light, causing the tank to fall and kill Cowell, who was within it. It seems evident that Lenny is the likeliest user of the prop to commit a crime. However, the reason for the victim being Cowell and reason for the chosen lady's disappearance remains mysterious. The deceased identity. The deceased is one of Lenny's assistants named Cowell. He was well trusted by all his colleagues. His job was setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. Cool. Okay. Look for the clues. पहले achievements देखें अपने को क्या मिली हैं. Complete a cruise on the aquabus. Hear about the prophecy that has been circulating around the Fontaine, like water disappearing into water. A detective in action. Investigate the truth of the incident as Lenny's attorney. Cool. गाइज अब मैं स्ट्रीम को यहीं पे बंद करूंगा. अब बाकी की क्वेस्ट करूंगा मैं कल. आज मुझे थोड़ा सा काम है, तो अभी मैं स्ट्रीम ऑफ करके अब अपना बाकी काम निपटाऊंगा. एंड विल कंटिन्यू विद द स्टोरी टुमारो. सो फार वेरी इंटरेस्टिंग. मजा आ रहा है. मतलब जैसे कि सुमेरु की आर्कन क्वेस्ट बड़ी थोड़ी मिस्टिकल सी थी ना. संसार साइकिल्स और ये सारी. अब पाइमन ने चश्मा नहीं उतार रही. पॉज मेन्यू के अंदर भी इसने चश्मा पहना हुआ है. ये क्या बात है भाई? अभी चश्मा पहन के ही रहेगी. गगन भाई वेलकम. थोड़े से लेट हो गया यार, तो मैं स्ट्रीम बंद करने वाला हूं, है ना. पाइमन भाई यहाँ पे भी चश्मा पहना हुआ इसने. व्हाट द हेल. एनीवेज, तो मजा आ रहा है ना. जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा सा मजा आ रहा है फॉन्टेन के अंदर. ठीक है, तो करेंगे अब कल करेंगे बाकी क्वेस्ट को. अभी इसको करते हैं बंद. मैं करूंगा अपने बाकी के काम शुरू. रिकॉर्डिंग बंद करता हूं पहले तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत वो लेती है. एनीवेज, लास्ट चैट कौन सी चैट रहेगी भाई? रोलर के फ्रंट टाइप लोड वाला होता है, उस पे लास्ट मार के बोलता है, लगता है हवा कम है. अच्छा, ओके आर्कॉन, ट्रस्ट मी इट गेट्स वे मोर इंटरेस्टिंग आफ्टर दिस. टेक केयर एंड थैंक्स फॉर स्ट्रीमिंग. थैंक यू फॉर कमिंग. बहुत दिनों के बाद आए, मुझे अच्छा लगा. आते रहा करो ऐसे. ठीक है, चलो यार, अब अपन करते हैं बंद, इसे करते हैं एग्जिट, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से डिस्कॉर्ड के अंदर अब के बाद, और कल मिलेंगे स्ट्रीम के ऊपर. चलो गाइज, टेक केयर. कमीशन कर लेना. हाँ मैं कर लूँगा, अभी करूँगा आराम से कमीशन. मैं अपनी स्ट्रीम कर रहा था, आपकी स्ट्रीम नहीं देख पाया. अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चलो ठीक है यार गाइज, टेक केयर. बाय. सी यू ऑन डिस्कॉर्ड और ऑन स्ट्रीम टुमारो. टेक केयर. It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my soul.
I'm still